Hello everyone, welcome back to episode 5. So in episode 4 we have done how to limit resulting using limit and top. Today we have learned how to remove duplicate using distinct. डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है जो कि रिटर्न करता है यूनिक वैल्यू को कॉलम के अंदर। और इफ दे आर इन डुप्लीकेट एंड रो डिस्टिंक्ट रिमूव द ऑटोमेटिकली। क्यों यूज करते हैं इसको हम? क्योंकि सम टाइम टेबल हैज बी रिपीटेड डेटा। फॉर एग्जांपल माइट वी हैव अ लिस्ट ऑफ यूनिक ग्रेड्स एंड यूनिक डिपार्टमेंट इन कंपनी। वी हैव टू यूज नेस्टिंग। मल्टीपल कॉलम्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है टू द company together, columns together in the SQL to check the combination of the column. We have to also use this string. That's it for the episode 5. You have learned how to use this to remove the duplicate. In the next video. We have covered aggregate functions like count, sum, average, minimum, and maximum. Don't forget to like and share, subscribe to episode 6.